Bismillahirrahmanirrahim. Today we will discuss question number 3. Find dy by dx of the following parametric functions. What are the parametric functions? Parametric functions वो फंक्शन होते हैं जिसमें दो वेरिएबल्स को कोई तीसरा वेरिएबल रिप्रेजेंट करता है. यहाँ पर x एंड y दीज आर टू वेरिएबल्स और इन दोनों वेरिएबल की राइट हैंड साइड पर जो तीसरा वेरिएबल है वो है थीटा. तो थीटा जो है वो x और y को आपस में एसोसिएट कर रहा है, इनको रिप्रेजेंट कर रहा है, इन्हें एक लिंक बना रहा है. तो इसलिए इन दो इक्वेशन को बोलेंगे पैरामीट्रिक इक्वेशंस. ओके जी. अब y यहाँ पर है, x यहाँ पर है, ठीक है, लेकिन हमने dy बाई डी एक्स फाइंड करना है. फाइंड dy बाई डी एक्स. तो स्टार्ट लेते हैं हम. x इक्वल थीटा प्लस 1 ओवर थीटा एंड y इक्वल टू थीटा प्लस 1. क्वेश्चन नंबर 3. x इज इक्वल टू थीटा प्लस 1 अपॉन थीटा एंड y इज इक्वल टू व्हाट? थीटा प्लस 1. वी हैव टू फाइंड dy अपॉन dx. ओके जी, हम ये एक इक्वेशन है हमारे पास, हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा. इक्वेशन के राइट हैंड साइड पे जो भी वेरिएबल होगा हम उसकी रिस्पेक्ट से उसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे. dx अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू ये. अच्छा, पहले मैं अगर इसको यूँ लिख लूँ, x इज इक्वल टू थीटा प्लस थीटा पावर माइनस 1. ये जो डिनोमिनेटर में थीटा है ये नोमिनेटर में जाकर इसकी पावर नेगेटिव हो जाएगी. ओके, नाउ वी विल डिफरेंशिएट इट विद रिस्पेक्ट टू थीटा. इट विल बिकम डी एक्स अपॉन डी थीटा. dx upon d theta is equal to the derivative of theta with respect to theta is d theta upon d theta which is 1 प्लस पावर फार्मूला के मुताबिक ये -1 पावर है, तो -1 इधर हो जाएगा साइड पर और थीटा की पावर -1 और फिर एक और -1 हो जाएगा. अगेन थीटा का डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा जो होगा डी थीटा अपॉन डी थीटा और ये 1 बन जाएगा. तो हमारे पास आएगा जी 1 माइनस प्लस माइनस माइनस थीटा पावर -2. इसका अगर हम फर्दर सॉल्व कर लें तो ये बन जाएगा 1 माइनस 1 अपॉन थीटा स्क्वायर. दिस इज इक्वल टू व्हाट? एलसीएम लेने के बाद थीटा स्क्वायर माइनस 1. दिस इज व्हाट? डी एक्स अपॉन डी थीटा. नाउ वी विल डिफरेंशिएट the second equation which contains variable y and it is what? dy upon d theta. dy upon d theta. On the right hand side the derivative of theta is what? 1 and 1 is constant, its derivative will be 0 and dy by d theta is equal to 1. This is required. Now we have to find dy by dx by using chain formula. Using chain rule, dy upon dx, this is equal to dy upon d theta multiply by d theta upon dx. ये dy ऊपर है, यहाँ पर पहले dy आएगा और लास्ट पर इधर dx आएगा. डायगोनल पर जो तीसरा वेरिएबल आएगा वो आएगा d थीटा. नाउ वी विल पुट द वैल्यूज ऑफ dy बाई डी थीटा विच इज 1. यहाँ पर आएगा 1 मल्टीप्लाई बाई डी थीटा अपॉन dx. लेकिन हमारे पास जो वैल्यू है वो है dx अपॉन डी थीटा, तो हम इसको डी थीटा अपॉन dx बनाएंगे लाइक दिस. Taking reciprocal on both sides we will get theta square upon theta square minus 1. ये हमारे पास क्या हो जाएगा? आपको आवाज आ रही है? यस. दिस इज dy by d theta is equal to
1 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये आंसर हो जाएगा थीटा स्क्वायर अपान थीटा स्क्वायर माइनस 1। ओके जी, आपको समझ आ गया। x इज इक्वल टू x इज इक्वल टू a इंटू 1 प्लस टी स्क्र और 1 प्लस टी स्क्र। हाँ, यहाँ पर मिस्टेक अगर ये सेम हो तो फिर कैंसिल हो जाते हैं। जहाँ पर नेगेटिव साइन है, ओके ओके, मुझे चलें बताएं, शाबाश। x इज इक्वल टू a इंटू ओके एंड y इज इक्वल टू 2bt। yes, t square and we have to find dy by dx। जो प्रीवियस पार्ट था उसमें जो हमारे पास तीसरा वेरिएबल था वहाँ पर वो था थीटा, लेकिन यहाँ पर जो थर्ड वेरिएबल है वो है हमारे पास t है। अब ये फर्स्ट इक्वेशन है हमारे पास एंड दिस इज द सेकंड इक्वेशन। हम इक्वेशन 1 को डिफरेंशिएट कर देंगे। ऑन द लेफ्ट हैंड साइड इट इज x dx अपॉन, राइट हैंड साइड पर वेरिएबल क्या है, t है, जो कि dx अपॉन dt। डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू t वी विल गेट, यहाँ पर जी ये कांस्टेंट है बाहर हो जाएगा, तो जो रिमेनिंग है यहाँ पर इस पर क्वेश्चन फार्मूला अप्लाई कर देंगे। यहाँ पर डिनोमिनेटर का स्क्वायर हो जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर होल स्क्वायर और दिस इज v एज इट इज 1 प्लस टी स्क्वायर इंटू न्यूमरेटर का डेरिवेटिव लेंगे। तो न्यूमरेटर में हमारे पास 1 है, 1 का डेरिवेटिव 0 माइनस टी स्क्वायर का हो जाएगा माइनस 2t ब्रैकेट क्लोज माइनस न्यूमरेटर नाउ एज इट इज 1 माइनस टी स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर, इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1 का 0 टी स्क्वायर का प्लस 2t। शाबाश। अब यहाँ से 2t कॉमन आ सकता है, हम कॉमन ले लेंगे। अब बार ऑलरेडी a हमारे पास अवेलेबल है, इट विल बी 280 इंटू दिस इज नेगेटिव माइनस इंटू 1 माइनस 1 माइनस इंटू टी स्क्वायर माइनस 2t माइनस टी स्क्वायर। हमने कॉमन जो लिया वजह से हमने प्लस 2t कॉमन लिया है, लेकिन ये नेगेटिव इन साइड ही रहेगा। ये नेगेटिव इनके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ना कि नेक्स्ट के साथ। ये नेगेटिव इन दोनों के साइन चेंज कर देगा। अब यहाँ पर ये माइनस 1, ये माइनस और ये वाला माइनस प्लस टी स्क्वायर हो जाएगा। और ये ब्रैकेट हो जाएगी हमारे पास क्लोज, डिवाइडेड बाई 1 प्लस टी स्क्वायर होल स्क्वायर। यहाँ पे हमारे पास टी स्क्वायर कैंसिल हो रहा है, माइनस 1 और माइनस 1 माइनस 2 इंटू प्लस 2 माइनस 4, लीजिएगा माइनस का 480 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर होल स्क्वायर dx अपॉन dt। अब हम इक्वेशन नंबर 2 को डिफरेंशिएट करते हैं। इक्वेशन नंबर 2 इट्स डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t। याद रखें राइट हैंड साइड पर जो वेरिएबल होगा उसकी रिस्पेक्ट से हमने डिफरेंशिएट करना है। लेफ्ट हैंड साइड पर y है तो ये बन जाएगा dy अपॉन dt। ओके, डिनोमिनेटर 1 प्लस टी स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर, और डिनोमिनेटर v एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ u, यहाँ पर u है जी 2bt, 2 एंड b आर द कांस्टेंट और t इज अ वेरिएबल, और डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू t, तो t का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t बन जाएगा 1, dt अपॉन dt 1 हो जाएगा। 1 इंटू 2b, आंसर 2b आ जाएगा यहाँ पर।
minus. Now this 2bt as it is, and the derivative of denominator 1 plus t square. The derivative of 1 is 0 and plus t square का power rule के अकॉर्डिंग 2t बन जाएगा. Now by multiplying 2b into 1, it will be 2b plus 2bt square minus 2 to the 4bt 4bt square. यहाँ से देखें हमारे पास कॉमन क्या आ सकता है. बस 2b कॉमन आ रहा है, हम 2b कॉमन ले लेते हैं इसमें से. क्योंकि कॉमन लेने के बाद हो जाएगा हमारे पास जहाँ पर 1 प्लस टी स्क्वेयर माइनस 2t स्क्वेयर डिवाइडेड बाय. यहाँ पर देखिए कोई मिस्टेक तो नहीं है, क्वेश्चन ठीक है. 1 प्लस टी स्क्वेयर ऊपर 2bt है. ओके ओके तो ये दो टर्म आपस में प्लस माइनस हो जाएंगी ना. ये हो जाएगा हमारे पास 2b माइनस 4bt स्क्वायर प्लस 2bt स्क्वायर माइनस 2bt स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस टी स्क्वायर होल स्क्वायर. और ये जगह हमारे पास 2b कॉमन 1 माइनस टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस टी स्क्वायर होल स्क्वायर. दिस इज व्हाट dy अपॉन dt. Now by using chain rule we have to find what dy by dx is equal to dy ऊपर है, ऊपर आ जाएगा, dx यहाँ पर आ जाएगा. तो डायगोनल पर क्या आएगा, dt आएगा. गुड. अब ये हमारे पास dy by dt की वैल्यू ये है 2b इंटू 1 माइनस टी स्क्वेयर upon 1 plus t square whole square multiply by this is dt upon dx, but it is dx upon dt. We'll take reciprocal of this term and we'll get minus 480 is numerator और ये बन जाएगा हमारे पास denominator minus 480 and the denominator will become numerator 1 plus t square whole square. It will cancel to each other because both are the same. Here 2 will cancel with 4 to 2 times 4 and the remaining is our required answer. Okay, b into 1 minus t square divided by minus 280. Good. This is what dy upon dx. Any question? Prove that y dy upon dx plus x is equal to 0. If given information is what x is equal to 1 minus t square over 1 plus t square and y is equal to 2t upon 1 plus t square. That given is what x is equal to over 1 plus t square.
y is equal to 2t divided by 1 plus 2 square. What we have to prove? Y divided by dx plus x is equal to 0. Is it fine? Okay, good. Now these are the two parametric equation x and y, and the third variable is t, which is representing these two variables. We have to prove y dy by dx plus x is equal to 0. It is our required proof. हमें यहाँ से अंदाज़ा हो रहा है कि हमने पहले फाइंड करना है dy by dx फाइंड करना है. तो ऑफ कोर्स पहले हम इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करेंगे. 1 को राइट हैंड साइड पर वेरिएबल t है तो dx by dt फाइंड करेंगे. इक्वेशन नंबर 2 को डिफरेंशिएट करेंगे राइट हैंड साइड पर जो वेरिएबल है उसकी रिस्पेक्ट से. इट विल बी dy by dt. देन बाय अप्लाइंग चेन फार्मूला वी विल गेट dy by dx. चलिए ये काम हम पहले करते हैं, उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्या होता है. ठीक है. नाउ differentiating with respect to t, we will get dx upon dt is equal to, using quotient formula, it will be 1 plus t square whole square. The denominator is called v and the numerator is called u. V square, v as it is, that is 1 plus t square as it is, and the derivative of u, the derivative of u minus 2t, okay, minus u as it is 1 minus t square, the derivative of v 2t. Now we'll take common 2t is common, the rest thing is, this is negative into 1, negative 1, negative plus t square, negative t square. Good. This is negative 1, negative into negative positive, plus t square, bracket close, upon 1 plus t square whole square. Now t will cancel and the minus 1 is minus 2, minus 2 into 2t is negative 4t upon 1 plus t square whole square. This is what dx upon dt. Now we will differentiate the second equation, the variable on the third side, on the right hand side. Okay, it is t. We will differentiate it also with respect to t. We will get dy by dt is equal to, using quotient formula, what is v? V is 1 plus t square and u is equal to 2t, and the square of v square of v as it is, derivative of u. What is the derivative of 2t? 2t, yes, only 2, yes, because t will become 1. Now minus u as it is and the derivative of v, which is 2t. Okay, now we'll take common 2t, no, not 2t, only 2. We'll take common 2 only. It will become 1 plus t square minus 1, 2 is common, the remaining is what? Minus 2t square upon 1 plus t square whole square. Now this minus 2t square plus t square, it will become minus t square, 2 into 1 minus t square divided by 1 plus t square whole square. This is what dy upon dt. By using chain formula, first we have to find dy by dx.
is equal to dy. Here we write dx on the diagonal, dt. Now, what is dy by dt? This is 2 times t square upon multiply by dt upon dx. But we have the value of dx upon dt. But we need dt upon dx. Therefore, we will take a reciprocal of this term and we will write here 1 plus t square whole square. After taking reciprocal, it will become 1 plus t square whole square upon minus 4t. ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे जी, 2 हमारे पास कैंसिल होकर यहाँ पर 4 से 2 बन जाएगा। यहाँ पर अब हम इसको लिख लेते हैं, ये बन जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर divided by minus 2t, and on the left hand side it is dy by dx. Now what we have to prove? This is our required proof. Y dy by dx plus x is equal to 0. Okay, you can see that dy by dx के साथ y मल्टीप्लाई हो रहा है, ऐसे ही है जी। तो हम ये करेंगे कि इस इक्वेशन को y से मल्टीप्लाई करा देंगे, मल्टीप्लाइंग बाई y ऑन बोथ साइड्स, मल्टीप्लाइंग बाई y on both sides, we will get y dy by dx is equal to ये 1 माइनस टी स्क्वेयर ओवर माइनस 2t, और इसको भी y से मल्टीप्लाई करा देंगे। और राइट हैंड साइड पर जो y है, इस y की हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y? 2t और 1 प्लस टी स्क्वेयर। गुड। दिस इज इक्वल टू 1 माइनस टी स्क्वेयर अपॉन माइनस 2t मल्टीप्लाई बाई 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वेयर। इज इट करेक्ट? ये 2t और ये 2t कैंसिल हो जाएंगे, तो ये नेगेटिव साइन बिगिनिंग में ऊपर आएगा जी 1 माइनस टी स्क्वेयर और 1 प्लस टी स्क्वेयर। अब ये जो है ये हमारे पास x की वैल्यू है, x इज इक्वल व्हाट? 1 माइनस टी स्क्वेयर और 1 प्लस टी स्क्वेयर। हम इसको एक्सपोर्ट कर देंगे, दिस इज इक्वल टू माइनस एक्स, और लेफ्ट हैंड साइड पर हमारे पास क्या है? y dy by dx है। तो यहाँ पर आ जाएगा y dy by dx, ये माइनस एक्स लेफ्ट हैंड साइड पर जाएगा तो जाके जाएगा प्लस एक्स। y dy by dx प्लस x is equal to 0. This is our required proof. Differentiate x square minus 1 over x square. ये एक एक्सप्रेशन है हमारे पास, इसको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x4। Question 5. Differentiate x square minus 1 over x square with respect to what? x is power 4। हम इन दोनों एक्सप्रेशंस को कोई नाम पुट कर देंगे। लेट जी suppose this is equal to t and this is equal to y, let t is equal to x square minus, इसको y का नाम दे दें पहले वाले को, let y is equal to x square minus 1 over x square, और इसका हम नाम देते हैं t का, t is equal to x4।
अब हमने जी फाइंड क्या करना है, हमने इसको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू दिस। ये क्या है y और ये t है, इसका मतलब है हमने dy अपॉन dt कैलकुलेट करना है। ओके, इस पर हमें फिर चेन फार्मूला अप्लाई करना पड़ेगा और सबसे पहले हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं y को, और इसकी राइट हैंड साइड पर वेरिएबल x है, तो सबसे पहले हम इसको पावर की फॉर्म में लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स पावर माइनस 2। नाउ डिफरेंशिएटेड विद रिस्पेक्ट टू x, जो वेरिएबल राइट हैंड साइड पर होगा उसकी रिस्पेक्ट से हमने डिफरेंशिएट करना है। dy अपॉन dx इज इक्वल टू, इट इज 2x माइनस इंटू माइनस 2 x is power minus 2 minus 1. Again the derivative of x, which is 1. No need to write again. It will become 2x plus 2x raised power minus 3. 2x plus 2 upon x power 3. It is taking LCM, x3 is the LCM, 2x4 plus 2. It is dy by dx. Now we'll differentiate this equation dt upon dx, जो राइट हैंड साइड पर वेरिएबल होगा उसकी रिस्पेक्ट से, it will be 2x only. Now by using chain rule हमने फाइंड क्या करना है, हमने dy अपॉन dt फाइंड करना है। dy अपॉन dt इज इक्वल टू, यहाँ पर dy आएगा और यहाँ पर dt आएगा, और ये dx डायगोनल पर आ जाएगा। गुड। व्हाट इज dy अपॉन dx? दिस इज 2x4 upon dx upon dt, the reciprocal of dt upon dx, it will be 1 upon 2x, and it will become 2x4 plus 2 upon 2x raised power 4. It is required derivative. Okay, yes. हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, आप टू कॉमन ले लें जी, और ये बन जाएगा हमारे पास x4 प्लस 1, नीचे 2x4, 2 कैंसिल हो जाएगा। फर्दर अगर आप इसको डिवाइड करना चाहें तो डिवाइड भी कर सकते हैं, बिकॉज इट इज़ एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, लेकिन ज़रूरत नहीं है, हमने जो रिक्वायर्ड था हमने फाइंड कर लिया है। ये हमारा आंसर है जी, x4 प्लस 1 अपॉन x पावर 4। ओके, 1 plus x square whole power n with respect to x square. Differentiate this with respect to this. One plus x square power n with respect to what? X square. हम इसको y का नाम दे देते हैं और इसको t पुट कर सकते हैं, u भी पुट कर सकते हैं। लेट y इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल पावर n एंड u इज इक्वल टू x, सॉरी t इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। t इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब हम इसको पहले डिफरेंशिएट कर लेते हैं जी विद रिस्पेक्ट टू x। इट विल बी dy बाई dx इज इक्वल टू पावर फार्मूला n इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू n पावर n माइनस 1 इंटू डेरिवेटिव ऑफ बेस। व्हाट इज बेस? 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो डेरिवेटिव ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज व्हाट? 0 प्लस एक्स स्क्वायर इज 2x
Okay, here the derivative of this second equation is dt upon dx is equal to 2x. Very good. Okay ji. Now by using chain rule, you know what we have to find? We have to find the derivative of this with respect to this. What is this? This is y, this is t. Derivative of y with respect to t, that is we have to find dy by dt. Good. Okay, by using chain rule, dy by dt, this is equal to, there is another variable other than x and y, which is x, but we have to find dy by dt. The third variable will take place on the diagonal of this formula. What dx, dy by dx is equal to 2x into n, 2nx into 1 plus x square raised power n minus 1 multiply by dx upon dt, but it is dt upon dx. हमने जो वैल्यू पुट करनी है वो dx अपॉन dt की वैल्यू पुट करनी है. ये रेसिप्रोकल हो जाएगा. गुड. 2x कैंसिल, x और 2 के साथ. रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा n इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल पावर n minus 1. शाबाश. This is dy by dt. Any query? Differentiate this with respect to this. Differentiate ax plus b upon cx plus d with respect to what? Ax square plus b divided by ax square plus d. The derivative of this term with respect to this. हम पहले इस टर्म, ये बहुत बड़ी टर्म है, हम इनको कोई नाम पुट कर देते हैं y और t. Let's suppose it is y. Y is equal to ax plus b upon cx plus d, and t is equal to ax square plus b upon ax square plus d. We have to find the derivative of y with respect to t, that is dy upon dt. First we will calculate this equation, equation number 1 say, it is second equation. We will differentiate equation number 1 with respect to variable on the right hand side, which is x. Now by using quotient formula, ये डिनोमिनेटर में जो है उसको v बोलते हैं, v का स्क्वायर cx plus d होल स्क्वायर, v as it is. Derivative of u, what is u? It is ax plus b. Here a is constant, b is constant, and x is the variable. The derivative of x is 1. 1 multiplied by a, it will be a, and the derivative of b is 0 minus ax plus b as it is into derivative of v, which is cx plus d, and it is c only. Okay, any question? Or just multiply a with these terms, it will be acx plus ad minus acx minus bc upon cx plus d whole square. Now it will cancel. The remaining is, it is equal to ad minus bc upon cx plus d whole square. On the left hand side we will write dy by dx. Now we will differentiate the second equation
with respect to the variable on the right hand side, which is x, and it will be dt upon dx by using quotient formula. What is v? Denominator is called v, ex square plus d. V square, that is ex square plus d whole square. Now v as it is, into derivative of u. What is u? It is ax square plus b. Okay, let me know what is the derivative of u. 2ax, that's good. B is constant, it will be 0, और a is also constant. The derivative of x here is 2x, 2ax, ये derivative बन जाएगा, minus u as it is, that is ax square plus b as it is, and the derivative of v, this is v, 2ax plus 0, it will be 2ax. 2ax is the common term. We'll take common 2ax into ax square plus d minus ax square minus b divided by ax square plus d whole square. Good. It will cancel. The remaining is what? D minus b. 2ax into d minus b upon ax square plus d whole square, and it is dt upon dx. Remember, we have to find what? Dy by dt. We can obtain required result by applying chain rule. Dy by dt is equal to dy upon dt, not dt, multiply by, here it is dt. Oh, the third variable is x, therefore it will become dy by dx and dx upon dt. As you know that, what is dy by dx? This is dy by dx, ad minus bc upon cx plus d whole square, multiply by 2ax into g. Oh yes, हमने रेसिप्रोकल लेना है इसका. It is dx upon dt, वो dt by dx, हम रेसिप्रोकल ले लेंगे जी. ax square plus d whole square divided by 2ax into d minus b. कुछ भी यहाँ पर कैंसिल नहीं हो रहा है, ये हमारे पास रिक्वायर्ड रिजल्ट आ गया जी. ठीक है, दिस इज dy by dt. ओके.